जवान, हम तुम्हारे बच्चे, हम तुम्हें बुलाते हैं, हम तुम्हें बुहारते हैं। हमारे संग बैठ लो, हमारे संग बतिया लो। एक दोना हड़ियाँ, एक पत्तल तहड़ी भात, हमारे साथ पी लो, हमारे साथ खा लो। हे आजी, हे आजा, जोहार जोहार जोहार। इस मंत्र की एक खास बात मुझे यह लगी कि इसमें कहा गया है सूरज की तरह उगने वाले, चांद की तरह चमकने वाले। यहाँ चांद और सूरज का मानवीकरण नहीं है, वो साक्षात प्रकृति के अंग ही है। मैं साहित्य अकादमी के विशेष कार्याधिकारी देवेंद्र कुमार देवेश को माइक पर आमंत्रित करती हूँ। साहित्य अकादमी और झारखंडी भाषा साहित्य संस्कृति अखरा दोनों के संयुक्त आयोजन में जो हिंदी की प्रथम आदिवासी लेखिका, कथा लेखिका एलिस एक्का की जन्मशती के अवसर पर आयोजित है, जिसमें देश भर से हम लोगों ने आदिवासी लेखिकाओं का जुटान किया है। इसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साहित्य अकादमी से पुनः स्वागत करती हूँ। आप सबको जोहार। ये बहुत खुशी का दिन है आज हम सभी के लिए कि हम जिस लेखिका के नाम से यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, कल हम उनकी शतवार्षिकी मनाएंगे। 100 साल वो अपने जन्म का पूरा करेंगी और ये जो समय है, इस समय ने यानी एलिस एक्का की जन्म शताब्दी का जो ये दिन है, इस दिन ने ये अवसर हम लोगों को उपलब्ध कराया है कि हम सभी पूरे देश भर में जहाँ कहीं भी आदिवासी विमर्श, आदिवासी लेखन, आदिवासी साहित्य से जुड़े हुए काम कर रहे हैं, सभी लोग एकत्रित हों और उन्होंने जो शुरू किया, हमारे पुरखों ने जो शुरू किया, उस काम को और आगे बढ़ाएं। वे एक बहुत अच्छी कवित्री हैं, नाटककार हैं, कथाकार हैं, आलोचक हैं, वे बहुत बड़ी विदुषी हैं और हम उन्हें अपने बीच पाकर अत्यंत उत्साहित हैं। मैं हमारे मुख्य अतिथि स्ट्रीमलेट डखार जी को माइक पर आमंत्रित करती हूँ। Thank you, Priti, Ranjana. Eminent writers, tribal writers, women tribal writers, poets from different parts of our country, ladies and gentlemen. Johar to every one of you. In fact, at the very outset, I should thank the organizers, the Sahitya Academy, New Delhi, and the Jharkhandi Bhasha Sahitya Sanskriti, Akhra, Ranchi, and privilege for me that tribal women writers are coming together to share their ideas and concern on tribal people of the nation through their writings and experiences. India has a diversity of races, religions, customs, traditions, arts, culture and languages. Among the dominant races of our nation, there is a huge number of tribal communities in our country. I will not be able to name all of them, at least to just name a few, because if I name all of them and if I missed out somewhere, it will be not a good gesture from my side. I just named only a few, like we have the Karoga, the Malay, the Pandaram, the Muduva, the Bonda, the Darwa, Saharia, Khara, Korwa, Bhumia, Mek, Arab, Ahir, Gadava, and many, many others, and the problems of women. Though the novel, the Coffer Dams, deals with all these issues, the theme of tribal people is also significant, as the focus was on the portrayal of the tribal people. She calls them herself the Aboriginal people. Women writers have started questioning the prominent old patriarchal domination
They have shown their worth in the field of literature, both qualitatively and quantitatively. The image of women in fiction has undergone a change during the last 4 decades. Women writers have moved away from traditional portrayals of enduring, self-sacrificing women towards conflict. Female characters searching for identity, no longer characterized and defined simply in terms of their victim status. Most of these people also, they are writing in English. But then those who are also writing in their own respective language, and when evaluating their writings, it really has the originality and the values of the writings. It is a fact that tribal literature and languages of India are undergoing transition. And when I say under transition in this modern era, I mean to say the contact with the dominant languages and literatures of the neighboring areas are seen as example stated as in the case of Hindi writers, especially those tribals who are in the Hindi belt, and Assamese writers who are in the main Assam, as one of the factors that leads to transition. The transition is reflected in almost all genres of literature written by tribal writers without excluding non-tribal writers. In such writings, their tribal identities are reconstructed. I always ask this question. We are tribal people. We have just heard about when Bandana talk about the Akhra, hum the, hum hai, hum rahenge. So now, in the question arises, we are tribal people. We were tribal people. We will be remaining tribal people. But do we have to reconstruct our identity? Because we are now in the dominant places where other dominant languages or dominant people, are in a large community. This is the question that I always post when I talk of the tribal identity. And the new development in the global world is another factor that brings about the change of tribal identity. Due to the recent development in the 21st century, people rush to the modern outlook that describes a multiplicity of changes. This also happens to the tribal citizens of India. The influence of westernization, the influence of science and technology on culture, on politics, on language, on literature is of great significance. We cannot deny this. It is a noted fact that bilingual or multilingual upbringing and the environment of residence is also, is always a main cause to have been influenced by globalization pertaining to language usage in the family, institution, society, and thereafter to most creative writers of the tribal languages and literature. Why I'm saying this? Because now when we talk about the environment, especially among the children of today, among them, they no longer speak in their own language. Even if they speak in their own language, they also mixed up with the English. The influence of social media and so on and so forth. And because of this, even tribal writers, when they are trying to write a novel or a poem or short stories, they tend to bend the usage of language into the dominant languages, maybe by using English, or by using Hindi, or by mixing of both, and also with the language of their own. So I will not talk very long. What I want to express here is that we should have this kind of meet in every state of our nation. We should get to know each other.
and share our experiences. And by doing so, I would request the Sahitya Academy, who always sponsor these type of programs, to also promote tribal writers, whether it's a seminar or it's a meet or it's a kind of symposium or a workshop rather, to bring us together, the varied fields of our tribal communities, and you will also see the genuine problems that we are facing. I belonged to a matrilineal society where we trace our descent from our mother. People, around the globe, I'm not saying only in India, around the globe, think that Khasi women or Garo women are the people who never face atrocities. But in reality, it is not. It is not at all. We are still, subordinate to men. With due respect to our men, they are our fathers, they are our maternal uncles, they are our brothers, they are our husbands. We always respect them, but at the same time, we also search for a place of equality, because both men and women, whether in my society or in any tribal society, we are able to compete in any field, in any profession. So I thought if our tribal writings are shared among us, and that could be translated in our local languages, and it could be done through the filter language, either Hindi or English, but it will help us a lot to know one another. And before I resume to my seat, let me pay tribute also to the pioneer of first tribal woman Hindi fiction writer, Ma'am late Alice Ekka. Let us follow her footsteps and keep on writing, not only about tribal identity, not only about ethnicity, but also about the experiences that has been told orally by our forefathers. Let us document all those so that people who do not belong to our tribal communities will not misinterpret what is behind the oral tradition that we have had in the past. स्वर्ण रेखा नदी के किनारे जंगलों और पहाड़ों से भरा है। रांची झारखंड, रांची और 1960 तक जंगलों से आच्छादित था। स्वर्ण रेखा नदी में पानी बहता था। आज आप उसको नहीं देख पाएंगे, क्योंकि उसके बाद से आज़ादी के बाद से रांची बहुत बदल गई है। तो हम उनकी कहानियों में उस पुराने समय के आदिवासी समाज को पाते हैं। आज के समाज में जब गाड़ियाँ नहीं चलती थी, लोग पैदल चलते थे, नदी नाव से पार करते थे बरसात में, और सियार बाघ भालू की बहुतायत थी। तो बाघ भालू की बात नहीं करते हो, क्योंकि उनको इनसे सामना नहीं होता, लेकिन आदिवासी समाज के बारे में लोग बात करती हैं कि आदिवासी समाज किस तरह जमीन से, जंगल से, पहाड़ से जुटा हुआ था, और वो बहुत सिंपल, बहुत सामान्य था। उनकी छोटी छोटी समस्याएं थी, और इन्हीं समस्याओं पर वो प्रकाश डालती है। इत्तेफाक से
हमें उनकी 6 कहानियाँ मिली। कहानियाँ तो हमने बहुत लिखी, लेकिन हम जैसे लोगों की आदत है कि मिला, पढ़ा और फेंक दिया। ये काम हम लोगों ने नहीं किया, जिसके कारण उनका साहित्य नहीं मिलता। उन्होंने 3 स्तर पर काम किया। एक कहानियाँ लिखना, दूसरा अनुवाद करना और तीसरा जो बच्चों से उनको बहुत प्रेम था वो दिखाई देता। इस सब की कहानियों को हिंदी में लिखा। खलील जिब्रान की रचनाओं को उन्होंने हिंदी में अनुवादित किया और गुलामी की अवस्था के बारे में कि गुलाम एक तन से होता है और एक तन और मन से, विवेक और बुद्धि से भी गुलाम होता है। और जो विवेक और बुद्धि से ही गुलाम होता है वो तोड़ता है बातों को कि स्वतंत्रता क्या है और गुलामी क्या है। और उन्होंने निष्काम भाव से लिखा, जिसके हम आज भूल रहे। उनके बच्चों ने तक उनके साहित्यकरण को संभाल कर नहीं रखा। ये उनका दुर्भाग्य रहा और आप लोगों का सौभाग्य कि आप लोग उनकी रचनाओं को ढूंढें और लिखें और फिर से आदिवासी साहित्य में जो सबसे प्राचीन लिखी रही है, उनके मन के विचार क्या थे, उनका मनोविज्ञान, उनका समसामयिक समाज विज्ञान, उनका इतिहास, वो बिरसा मुंडा के खानदान की थी, परिवार के खानदान की, और उन पर कितना प्रभाव पड़ा समझे। तो ये सब आप ढूंढेंगे तो आगे जब कार्यक्रम होगा तो हम उनके बारे में और सुनेंगे कविताओं में। मैं आप सबको धन्यवाद देती हूँ। एक्का की कहानियाँ भी हमें परस्पर जोड़ती हैं, जिन पर डॉक्टर रोज के पिता ने विस्तार से चर्चा की। वे ऐसे ही हमारा मार्गदर्शन करती रहे और ईश्वर उन्हें लंबी आयु दे। एक बार फिर से उनका बहुत धन्यवाद। मैं औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन हेतु एलिस एक्का की भाभी एलिस पूर्ति जी, उनको मंच पर बुलाती हूँ कि वे आए और 2 शब्द कहें। सबों को जोहार और तहे दिल से धन्यवाद देने का मौका मिला, तो मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उस समय मुझे 2 शब्द धन्यवाद के रूप में बोलने का मौका मिला और ये अचानक बोला जाए, इसलिए आज अखिल भारत भारतीय आदिवासी लेखिका सम्मेलन के उपलक्ष्य में मैं अपनी दीदी को, वो मेरी जेठ सास थी, जो सब कहानी जो अभी रोज दीदी ने बतलाया, तो मैं पहुंच गई खुटीटोली और सचमुच में खुटीटोली में उनका जन्म हुआ और मैं वहाँ उसका भाई की बहू बन करके गई और सब रांची में रहते थे और रांची में ही बाद में सबका पढ़ाई लिखाई हुआ। लेकिन सचमुच में बहुत अद्भुत नारी थी, वो दीदी थी, माँ थी, लेकिन एक बहुत हम लोग के लिए प्रेरणादायक। हम लोग जो मनुष्य हैं, मनुष्य उसका रख रखाव, उसका यूज करने नहीं जानते हैं और जो अभी जो हो रहा है समाज में, वो सब का बचाव करना ही इस साहित्य सबसे ही होगा। और हमारे लोग जो आप लोग जैसे लोग जो आए हैं यहाँ, सजन लोग, बुद्धिजीवी लोग, इन्हीं का ये जो लिखिएगा, लिख रहे हैं, उसी को जरूर लिखने से जरूर
लोग पढ़ेंगे और जिस तरह से आज दिल्ली जो पूरा इतने समय से लिखी और उसका उजागर इस समय हो रहा है और हम लोग उसको रख रखाव नहीं कर पाए, लेकिन हम फिर से धन्यवाद देते हैं वंदना के जो इसके लिए बहुत मेहनत करके खोजी और ये समाज के सामने आया है। और चाहेंगे कि जितने लेखक लेखिकाएं हैं वे इस सब काम को करें कि आने वाला पीढ़ी इसको पढ़ के जागृत हो और ये हमारा समाज का कल्याण हो और सभी को हम बचाने पाएँ। इसके साथ ही हमारा उद्घाटन सत्र समाप्त होता है। अभी हम एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद हमारा प्रथम सत्र आरंभ होगा, जिसका विषय है भारतीय साहित्य में आदिवासी लेखिकाओं का अवदान।